Hello my dear student. In previous class we have already proved two equations by using integration and derivative. That is, we already proved v is equal to u plus at, which is first equation, and second equation is s is equal to ut plus half at square by using integration and derivative. In this class we will prove another two equation of motion, that is v square minus u square is equal to 2as, and fourth equation is SNTH is equal to u plus a by 2 square minus 1. So let's start to prove these two equation of motion, third equation and fourth equation, by using integration and derivative. So first we start third equation of motion. Third equation of motion, that is we prove v square minus u square is equal to 2as. So in this case we prove velocity in a certain position. In this case we prove velocity in a certain position. So if we divide the time, then velocity is converted into acceleration. So this formula can be derived, or this expression can be derived by the help of instantaneous acceleration. So instantaneous acceleration of a body is given by instantaneous acceleration of a body is given by a is equal to dv upon dt. In this formula there is no required of time limit, because in this case there is no time. So we are trying to omit this time. So if we omit the time, then we multiply upper and lower with ds. Then instead of ds upon dt, we can be written instantaneous velocity. That means a is equal to dv upon dv upon ds into ds upon dt. That implies a equal to dv upon ds, and instead of ds upon dt we can be use velocity. So मन रखिथिबो ई फार्मूला रे जेहेतु टाइम नै ना, हम टाइम के कटे जामा जेतु ई फार्मूला में डिराइव करबा আছে। सो टाइम के जदी कटे जामा बोले दुआरे ds ds मल्टीप्लाई करबा, जा ds ds मल्टीप्लाई करबा तबे किछि इफेक्ट ही फार्मूला रे आसे भी नै। तबे का करबा ds upon dt जाय लिखि पारबा वेलोसिटी, तो ds upon dt सजे तो लिखि देलो, खाली सजेलो ds याडे गला dt याडे तो खाली सजेलो किछि नै। हम जेहेतु वेलोसिटी दरकार है, वेलोसिटी के एकला रखो d v is equal to a ds. So this is equation 1, and in this equation 1 if we integrate both sides, then we get final value, that is velocity. So how can we integrate, and what limit in this formula we use? So in this case b is connected with v and d is mixed with s. So limit will be from v to s. So first हमें लिमिट बाहर कर देना. In time 0 second the velocity is initial velocity u and displacement is initial displacement 0, and in time t is equal to t second, the velocity is final velocity v and displacement is final displacement s. That means initial time the body is at origin, so its displacement is 0, and after some time the body move with final velocity v, so it covers some distance, suppose there are s. So integrating this equation, equation 1 we get.
देखो जेहेतु डी वी रे लागि छ डी एस रे लागि छ तो ई दुई लोकर काजे खाली इंटीग्रेशन हबा मन रखिथिबो आ ई आंसर ता डिराइव होचे एक्सेलरेशन रू बिकॉज़ हम वेलोसिटी डिराइव करबा আছে तो वेलोसिटी रो टाइम डिवाइड करले कोन आसबा एक्सेलरेशन सो आंसर ता एक्सेलरेशन रू ही डिराइव होबा तो स्टार्टिंग जिनिसटा लिखि पारबो बोले आंसर तळगु तळ ऑटोमेटिकली हि जीवा किंतु स्टार्टिंग पॉइंट ता तमे लिखि पारबो जे डेरिवेशन केनु आछे वेलोसिटी डिराइव करबा আছে तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन रू आसला बिकॉज़ वेलोसिटी रा टाइम डिवाइड करले कोन आसबा एक्सेलरेशन सो वेलोसिटी जेहेतु डिराइव करूछु तो ताने टाइम डिवाइड करले एक्सेलरेशन हबा सो एक्सेलरेशन रू वैल्यूटा डिराइव होछि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सो इंटीग्रेटिंग दिस बोथ साइड dv proper limit u and v is equal to a ds in this case limit is for displacement 0 to s then dv integration v then integration करला पर u और v आके पड़ेगा and in this case a is constant because integration only for ds so h a is constant so it is out from the integration box that means a is out from this integration then 0 to s ds that implies in this case we use upper limit and lower limit that means v minus u is equal to in this case a v minus u sorry I left this v right v left this v so left this v sorry in this case integration will be v square by 2 dvv v square by 2 then limit will be u to v that implies this is putting higher limit then it is v square by 2 and using lower limit then it is u square by 2 that equal to a ds ro integration only as ds if we common these two 1 by 2 then v square minus u square is equal to integration करला पर लिमिट आको पड़े थिला so a s minus 0 means as finally v square minus u square is equal to these two into this side to a s this is third equation of motion which is 2 third equation of motion so बहुत सहज किछि नै तमे खाली स्टार्टिंग जिनिसटा जानला अछि आ जे v रो वैल्यू थिला v रो वैल्यू नि कर ही डिराइव करबो यो फार्मूला रे dvv होछि ओ ठीक अछि next final equation of motion fourth equation of motion fourth equation of motion that is Sn th is equal to u plus a by 2 to n minus 1 this formula will be proved by using integration and derivative. So you know that SNTH is equal to Sn minus Sn minus 1. If you have any doubt, then you watch previous video. Then you clear this formula. Then SNTH is equal to Sn minus 1. That means in this case, what is Sn? Sn is the distance covered by the body in n second. And what is n minus 1? N minus 1 is the distance covered by the body in n minus 1 second. That means n minus 1 second is the lower limit of time and n is the final distance or for final distance n is the final limit of the time. So in this case also we derive the displacement. So displacement जेहेतु हमें derive करूँ so if we divided displacement with time then we get velocity. That means this formula can be derived by the instantaneous velocity. तो बार बार बुझे जे कौन से जिनिस तुम जेटा derive करूँ by using integration and derivative तुम जेते बेले derive करूँ बोले जे जिनिसटा derive करूँ
स्टार्टिंग पॉइंट के तुम लिखवा अछि स्टार्टिंग पॉइंट लेके जानो ऑटोमेटिकली तलके तल तुम आंसर बाहर चलबा किंतु स्टार्टिंग पॉइंट लगवाटा इंपोर्टेंट तो इन जेहेतु डिस्प्लेसमेंट अछि डिस्प्लेसमेंट टाइम डिवाइड करले केना आसबा वेलोसिटी सो हम वेलोसिटी रो डेरिवेशन को स्टार्ट करबा सो इंस्टेंट टेनियस velocity of a body is given by v equal to ds upon dt and we want to know this value so displacement when displacement is separate then ds is equal to v into dt or in this formula also a is introduced and n means also time is introduced so we want to direct the time we want to bring the time instead of v then ds is equal to instead of v we can be used v is equal to u plus at and instead of v you can be used v is equal to u plus at then dt is dt clearly बुझला तबे इना इंटीग्रेशन का जाबा इंटीग्रेशन हवा ओनली ds और टाइम रखा जाएगा सो फॉर बुझो तो जेतो ds पाके अछि तो इंटीग्रेशन हवा डिस्प्लेसमेंट रखा जाए और dt पाके अछि सो इंटीग्रेशन हवा dt रखा जाए तो फर्स्ट हमें लिमिट बाहर कर देना एंड इक्वेशन को पुट करना आंसर का बाहरी जीवा किंतु v जगह रे u प्लस एटी का यूज करली बिकॉज़ ई फार्मूला रे a और n मींस टाइम अछि सो u आउ टाइम मानबा के v जगह ते यूज करलो u प्लस 80 एंड h एक्सेलरेशन भी अछि सो v जगह ते लिखलो u प्लस 80 जादरा कि सब पळे आसला जति ई फार्मूला रे दरकार हम डिराइव करबा पाए किंतु डेरिवेशन रे जेतु डिस्प्लेसमेंट अछि टाइम डिवाइड करले कि आसबा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रो ही डिराइव करा जिबा सो फॉर टाइम t is equal to 0 second for time t is equal to 0 second displacement is 0 but in this case we use two limits for displacement then we get s and th that means lower limit is n minus 1 so time is equal to n minus 1 second for lower limit so displacement is equal to s n minus 1 then final time n and final time n the body cover distance or displacement sn so final time limit t is equal to n second and in this case displacement is s is equal to sn so हमें ई टाइम ही यूज करना बिकॉज़ हमें sn th बाहर करवा छै बोले फाइनल टाइम हो छै n और इनिशियल टाइम हो छै n minus 1 so initial time n minus 1 रे डिस्प्लेसमेंट थिला sn minus 1 और फाइनल टाइम n रे डिस्प्लेसमेंट हला sn ई दुईटा जिनिस ही यूज हबा बिकॉज़ फार्मूला हमें sn minus 1 जेंटा कि sn th हम डिराइव करू छु सो फाइनल टाइम हमें नामा n and initial time नामा हमें n minus 1 then it formula derive hi parwa because in limit hi hoche initial time n minus 1 second रे displacement cover करू छै sn minus 1 और final time n second रे displacement cover करू छै sn जाका हम सब्ट्रैक्ट करले sn th रो displacement पाउ छु जा डाउट होचे प्रीवियस वीडियो देखि देबो फार्मूला केंगो असला तुम जानि पारबो then एबा हम इंटीग्रेशन दो इक्वेशन 1 integrating equation 1 we get integrating equation 1 we get ds रो इंटीग्रेशन दियो initial distance initial time n minus 1 second so initial distance होचे sn minus 1 so initial distance दलो sn minus 1 then final time n so final distance sn is equal to in this case we integrate for time initial time n minus 1 second final time n then u plus at dt इक्वेशन आन का में इंटीग्रेट करो ई वैल्यू के सॉल्व करी चलो लास्ट के फाइनल वैल्यू के डिराइव ही जीवा
If you solve this value, then you reach this final value or derive this final value. So solve this value. ds integration s, ds रो integration होची s. Limit आके पड़े असला s n minus 1 initial distance sn is equal to, in this case there is two function, so integration for two function is for u dt, limit will be n minus 1 second to n second, then plus at dt b is equal to u plus at use करथिला देखबो at dt integration for n minus 1 to n second. That implies instead of this value we use higher limit and lower limit, then the value will be sn minus sn minus 1 is equal to u dt रो इंटीग्रेट u आउ डायरेक्ट मो कहि होचे dt रो इंटीग्रेट t स्क्वायर ब्रैकेट हम इंटीग्रेशन करला परे, किंतु स्क्वायर ब्रैकेट रो भीतर u नहीं रहबो बिकॉज़ u कांस्टेंट बाहरी जेबा, तो dt रो इंटीग्रेशन t देन इंटीग्रेशन करला परे स्क्वायर ब्रैकेट हसबा टाइम आके पड़ाबा n minus 1 रो माइनस सॉरी प्लस a कांस्टेंट बाहरी जीवा t dt रो इंटीग्रेशन t square by 2 then limit आके पड़ेबा इंटीग्रेशन करला पर n minus 1 to n second. बहुत सारा किसी ने सिंपल मैथमेटिक्स हां a कांस्टेंट बाहरी वाला, सो इंटीग्रेशन t dt रो t square by 2 हला, जेहेतु इंटीग्रेशन t dt रो का हिचे तो t dt ब्रैकेट भीतर रहबा और लिमिट आके पड़े. एबे सॉल्व करो. Instead of sn minus 1 we can be use snth देखि दबो जे snth का हम बारतिला जे डिस्टेंस रे बॉडी को कवर करथिला सेटा माइनस लोअर टाइम जे टाइम रे बॉडी कवर करथिला सपोज n टाइम रे बॉडी कवर करथिला तो snth is equal to n टाइम रे बॉडी केते कवर करिचे माइनस ता लोअर टाइम n minus 1 हबा. तो तुम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो रे पढिचो बुझी देबो, तो sn minus 1 रे हम लिखि पाम snth, किंतु ए इक्वेशन दा परीक्षा रे पढबो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव ग्राफिकली नहीं मन रखियो एटा हमने इंपोर्टेंट. सो u इंस्टेड ऑफ t you use n minus 1 n minus 1 for a higher limit put करो for a lower limit plus a तुम चाहे बोले डायरेक्ट 2 के बाहर कर दी पारबो सरावा t स्क्वायर देखो t स्क्वायर by 2 t जारे थोड़े हायर लिमिट पुट हवा मींस n स्क्वायर by 2 हवा n स्क्वायर by 2 माइनस t जाती थोड़े लोअर लिमिट पुट हवा n t रो स्क्वायर जाती n minus 1 रो स्क्वायर by 2. तो तुम चाहो बोले 2 कॉमन में करी बाहर कर दी पारबो 2 कॉमन दी गलो. देन फाइनली snth is equal to u, and if we break this bracket then n minus n minus plus 1 plus a by 2 n square minus, instead of n minus 1 whole square we use the a minus b whole square formula, so then a square plus b square minus 2ab means 2a. then simple mathematics हमें सॉल्व करके चलो आंसर ऑलरेडी बाहर जाओ. n minus n is 0, then 1 0 plus 1 is 1 into u is u.
plus a by 2. Then if we break this bracket, then n square minus n square minus n square minus 1 square minus minus plus 2n. Finally you get the answer. SNTH is equal to u plus a by 2. In this case n square will be cancelled. Then in this value only left 2n minus 1. So 2n minus 1. Finally you prove the equation. So this equation can be proved by the help of instantaneous velocity. Here we want to find the displacement SNTH. So if we divided the time, then it formed velocity, instantaneous velocity. So we derive this equation from the instantaneous velocity. So dv is equal to ds upon dt. then हमें जेहेतु ds बाहर करवा আছে, ds के एकला रखि देबो v dt. then जेहेतु a আছে v जगह रे हमें लगबो u plus at dt कर देबो. then इंटीग्रेशन कर चलबो, आंसर का बाहरी जीवा. then आज गोटे न्यूमेरिकल करो, गोटे न्यूमेरिकल करथियो. A jet plane start from rest. A jet plane start from rest with an acceleration of 3 meters per second. With an acceleration of 3 meters per second square, and makes a run of 35 seconds before taking off, and makes a run of 35 seconds before taking off. What is the minimum length of the runway? What is the minimum length of the runway and what is the velocity of the jet at takeoff? And what is the velocity of the jet at takeoff? So if we solve any numerical, first we focus in the given data. So in this case, which are the given data? A jet plane starts from the rest. That means initial velocity will be 0 because the jet plane is start from the rest. Within an acceleration, finally say acceleration start to upper accelerator ही चल रहा. So acceleration will be 3 meters per second square. Makes a run of, that means time दे दीजिए 35 seconds before takeoff. That means jet plane before takeoff ऊपर के fly करवा पूर्वरु से कितने टाइम रे मूव कला 35 second time रे मूव कला as per this question. Then go to what is the minimum length of the runway. That means कितने length तक runway रे travel कला. That means हमके distance पहुँचना. And what is the velocity at the jet at takeoff? अब से कितने final velocity द्वारा से takeoff कला ऊपर के बोली वाला. हमने final velocity. तो S ऊपर आगे focus करो. U दीजिए, A दीजिए, T दीजिए. So S is equal to ut plus half at square. You get easily this answer. ut plus half at square. बहुत सहज है सर. Rest टू बाहर चाहिए initial velocity दीजिए. Acceleration दीजिए. Time दीजिए. Before takeoff time भी दीजिए. Before takeoff तो से distance कितने दूर जाऊँचे से time दीजिए. Before takeoff.
तुम आराम से बाहर करि पारबो वैल्यू यूज करबो सब वैल्यू यूज करबो फाइनली तुम आंसर का बारीबा 1835.7 मीटर आंसर निजे बाहर करबो 37.5 मीटर then finally we find the value of v in this case u दीजिए t दीजिए a दीजिए so use v is equal to u plus at so u 0 plus a t into t 35 so answer will be 3 5 is 15 5 3 3 is 9 9 10 meter per second this is answer so जे कौन से न्यूमेरिकल दिथिबो एटा तुम सहज न्यूमेरिकल गोटे फार्मूला बेस रो जे कौन से न्यूमेरिकल दिथिबो आले तुम फर्स्ट गिवन डाटा देखि देबो और कार पछरे छे देखि देबो એટલે ऑटोमेटिकली तोर माइंड ने फार्मूला सेटअप ही जीवा यदि u a और t दिछे એટલે s = ut + at स्क्वायर फार्मूला ही यूज होबा और जे तो u और a और t दिछे तो v = u + at यूज होबा थैंक यू।